Hello children, a very good morning to all of you. Welcome back to this new session. Hello, as you all know, I am Mrs. Anant Bir Kaur Chima, English mistress, presently posted at Government Senior Secondary Smart School, Nanpur Kesho, District Patiala. So children, how are you all? I hope you all are good and healthy, fit and fine. So, today is our session of the Giving Tree lesson number 4, especially designed for class 6th, and this is part 2. Okay, now, you all might be wondering what is part 2? The Giving Tree part 1 was the chapter in which I read and explained you the chapter, the difficult words, the question answers, the fill-ups, everything related to the chapter. And then I gave you a couple of question answers for homework as well. But as you all know, if you go through your workbooks or if you go through the back exercises related to every chapter, you see there are different grammatical vocabulary related very exciting exercises ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬ੍ਰੇਨ ਬੂਸਟ ਅਪ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਸਟ ਟੂ ਇਨਕਲਕੇਟ ਇੰਟਰਸਟ ਪਲੱਸ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਆਫ ਦ ਮਾਈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ some backup, some feed for your mind. So that feed is present in all the back exercises. Every exercise is very important, technically very enthusiastic and exciting. ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ learn ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ if you go through the back exercises. So one very important exercise which I found out. Now these exercises I have taken up from the back side of the lesson as well as the workbook, plus which we are expecting you'll get lot many in future. Okay, so one which I picked up for you, which I thought is very interesting for you and very necessary for you, is mind mapping. Map pata na ki hunda? What is a map? Representation of the globe on a piece of paper, है ना? hun je main kaha कि मैं पटियाले तो मोहाली जाना है या मैं मोहाली तो कन्याकुमारी जाना है या मैं कन्याकुमारी तो कनाडा जाना है, तो फिर मैं किथे देखूंगी ये रूट्स, किथे देखूंगी? मैप ते देखूंगी, है ना? इसी तरह ही जब साडे आइडियाज दूर होंदे, एक आइडिया उत्थे पिया, एक आइडिया उत्थे पिया, एक आइडिया साडे पिछले पासे है, एक आइडिया साडे खब्बे पासे है, हुणे आइडियाज नूं वी तां इकट्ठे करके असी एक solid, one solid idea we have to make. For that we use the technique of mind mapping. You map up the whole network in your mind. So this word we have in the middle, and then you frame something out of it with all those scattered ideas. So let me tell you what is mind mapping actually. So definition of mind mapping is: a mind map is a graphical way to represent ideas and concepts. It is a visual thinking tool that helps structuring information, helping you to better analyze, comprehend, synthesize, recall and generate new ideas. Given below is an example. तो बच्चे हुन सोच रहे होंगे हाय आ तो मैम ने बड़े औखे वर्ड्स बोले ने. नो, नाउ यू स्टडी इन इंग्लिश मीडियम तो तुसी प्रिपेयर करना अपने माइंड नो कि असी क्लास 7th च जाना है तो तुसी अपना ग्रेड अप करना विद ऑल योर वोकैबुलरी. ओके, सो माइंड मैपिंग एक ग्राफिकल वे है, एक ग्राफ है टू रिप्रेजेंट आइडियाज जो थोड़े दिमाग दे अंदर जिन्ने भी सुझाव ने, आइडियाज ने, सजेशंस ने एंड कॉन्सेप्ट्स जो थोड़ा थिंकिंग पैटर्न है. इट इज़ अ विजुअल थिंकिंग, अखा खोल के थॉट प्रोसेस है थोड़ा. जरूरी नहीं है कि तुसी पेन नाल ही समझाना है, तुसी आइडियाज नू सिर्फ कोलैबोरेट करना है. एंड दैट हेल्प स्ट्रक्चरिंग इन्फॉर्मेशन. हुण असीं किते किते इट्टां रखदियां होईयां ने
ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਬਣੂਗੀ। ਸੋ दैट इज़ माइंड मैपिंग, helping you to better analyze, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। comprehend, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਖਿਲਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। synthesize, blend, ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਆਈਡੀਆ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, that's synthesizing। recall, ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ, ਦੁਹਰਾਈ। and generate, ਤੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਪਨਪਣਗੇ, how they're going to take birth from your mind। so given below is an example। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ this figure is going to tell you what I'm talking about। so this is mind mapping, and today the main topic I want you to map in the mind regarding education। the word written in the red ink in middle is education। when I call out this word education, there are lot many things which start coming into your mind। you have different ideas। थोड़ा दिमाग फटाफट की काम करता है। थोड़े स्कूल याद आਉਂਦਾ कि education किथे मिलती है, स्कूल च मिलती है। and then you have skills, ਸਾਡੀਆਂ teaching skills, ਸਾਡੀਆਂ learning skills ਸਾਰੀਆਂ education ਨਾਲ related ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। then you have values, teacher ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਅੱਛੀਆਂ values ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ assembly 'ਚ ਇੱਕ moral thought ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, thought of the day ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। then career, definitely education ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ profession ਕੀ ਤੁਸੀਂ choose ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ guide ਕਰਦਾ ਹੈ। then there are so many other things, you have teaching, you have learning, you have motivation, and then science is there, maths is there, so 100 and many things which are related to education। so these are ideas are actually the outcome of education। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ, education ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਖਿਲਰ ਜਾਣਗੇ ਆਈਡੀਆਜ਼। ਅਗਰ ਇਹ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, education। so this is a process, this is a synthesizing of ideas। ठीक है। so now this activity I have prepared for you on the basis of mind mapping। I know many schools, many teachers are doing a lot in mind mapping, and this is one of my favorite activities because children thoroughly enjoy doing it। so this I would suggest teachers that you can include it as a pre-reading activity। so in reading we have 3 stages, that is pre-reading, then we have while reading, and then we have post reading। pre-reading is before the declaration of the topic of the chapter, while reading is when the reading is going on, and then is post reading, that is actually the recap of the whole thing। so this mind mapping, we found out latestly in our training that mind mapping is a very good exercise which can be introduced as a pre-reading activity, so that you can build up the mind of a child, that what is he going to read in the chapter। so this is the giving tree। the giving tree, if you try these kind of activities in your other chapters now in your syllabus, definitely you'll get a positive result। the students must complete maximum missing blanks of the mind map। few have been done for you। so there are a couple which I have done and a couple of them which I want you to do with me। okay, so this is the giving tree। when we read the story or when we read the story, there are so many things which I thought we must appreciate and respect the tree about। so tree was kind। why kind? why kind? see, with mind mapping you can do one line answers also। why was the giving tree kind? because he was kind enough to give all what he had। he never even thought once, he was ready to give away everything। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। okay, then best friend, tree is your best friend in the chapter, in your life tree is your best friend। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧੁੱਪ ਲੱਗਦੀ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਟਰੀ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧੁੱਪ ਲੱਗਦੀ ਹੋਏ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਂ ਦੇਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੂਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੀ ਐਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ
कि आप तपश सहे ते तानू ठंड दे, that is the value of a best friend. That is a perfect characteristic of a best friend. And then is backer. What do you mean by a backer here? Backer means जो बहुत थोनू लाइफ थोड़ा बैकअप रखे, थोनू बहुत कुछ दे, थोनू मोटिवेशन दे. हुन ट्री बैकर किवें सी, जद त लिटिल बॉय ने ਉਹਦੇ ਤੋਂ फ्रूट्स लेने चाहे उन्हें फ्रूट देते, जद उन्हें घर बनाना चाहा तो उन्हें लकड़ देती, जद उन्हें बोट बनाना चाहे तो उन्हें अपना सारा ट्रंक ही देता. So and when he needed money he said, okay, you take away all my apples and then go and sell it. So he was a backer, financer for that boy, sponsor for that boy, है ना. Then tolerant, बहुत ज़्यादा सहन शक्ति. थोड़े छे नहीं सहन शक्ति कि थोड़े बैग चो कोई कॉपी कढ़ ले, पेंसिल कढ़ ले, तुसी किवें रोंदे होए जाने हो टीचर कोल, मैम इन्हें मेरी बुक चुरा ली, मैम इन्हें मेरी पेंसिल चुरा ली. अगर थोनू पता होए थोड़ा बेस्ट फ्रेंड उन्हें कढ़ी है, तुसी तां भी कोऑपरेट नहीं करदे. कई बार थोनू इन्ना गुस्सा लगदा कि मेरी चीज़ है मैं क्यों दवां, पर ट्री ने तो एक बार भी नहीं सोचा, डिडंट इवन थिंक ट्वाइस. उन्हें दूसरी थॉट ही नहीं दी, फटाफट बच्चे ने जो मंगया उन्हें प्रोवाइड करता. सो ही वॉज टॉलरेंट. किसी दी बांह कट्टी जाए तो थोड़े तो पेन टॉलरेट नहीं होंदी ना, पर ट्री ने टॉलरेट की. एप्पल्स टुटे टॉलरेट किते, ब्रांचेस कट्टियां टॉलरेट किया, वो बेचारे दा मुड ही कटता टॉलरेट किया, है ना. सो ही वॉज द मोस्ट टॉलरेंट. एंड देन लॉयल, very loyal towards the mankind. In our real life also, in the chapter also, tree the most loyal thing on this earth. And then sacrifice. Oh, he did a lot of sacrificing. बहुत ज़्यादा बलिदान. ये स्टोरी बनी ही बलिदान दे ऊपर है कि एंड च भी जब उदा सिर्फ एक स्टंप इन्ना हिस्सा रह गया, तां भी वो बेचारे ने अपनी पेन नहीं उन्होंने दसी. ਉਹ जब लड़का बुजुर्ग हो गया कहता ओके यू सिट एंड रेस्ट ऑन मी, आई एम जस्ट अ स्टंप, है ना. फिर भी बंदा इन्ना सैल्फिश है, फिर भी ट्री दे स्टंप ते बैठ के ही उन्हें रेस्ट की. होर देखो बेटा वर्ड्स थोड़े दिमाग च कोई होर वर्ड्स आउंदे ने माइंड मैपिंग च. ट्री होर की बोल के दसो अपने टीचर्स नू. ट्री होर की कर सकदा, काइंड हुंदा है, बेस्ट फ्रेंड हुंदा है, सेल्फलेस है, सैक्रिफाइसिंग है, लॉयल है, टॉलरेंट है, हैकर है. होर की है? गिव्स अ लॉट ऑफ फ्रूट्स, है ना, बेस्ट फ्रेंड. देन व्हाट एल्स? गिव्स शेड. देन yes, you get wood for your furniture, so he's a sponsor. So lot many things the tree is giving to you. So this is a mind mapping activity. I would expect the teachers to help the students out to fill up the circles which I have left for them, or ask them what they would like to fill in them. So it is going to be a good interaction as well. So let's move forward. Then we have a beautiful exercise called speak and write. This is basically a dictation. So this is how well a child tries to listen to you. So this basically improves your listening skills. So this is really going to help you in future, because the more you concentrate to listen well, the better you'll write. Why? Because if you listen to the exact word, only then you are going to write the exact thing. So this will improve your dictation a lot. थोड़ी जिहड़ी dictation है बहुत ज़्यादा improve होगी, जिन्हों तुसी बोल लिखित कहने हो. हुण असी छोटे तां रही नहीं कि असी words बोल लिखित च करांगे, तां असी पूरा paragraph करांगे. Okay. Now the teacher will read out a paragraph which the students will need to carefully listen and fill in the blanks accordingly. So this is the paragraph with fill up. So I am going to read the paragraph and फटाफट बच्चों ने अपनी नोटबुक पेंसिल, मैं अपने स्कूल सारे बच्चों को दस्या होया है कि जब भी एडुसेट दे लेक्चर सुनन जाना ROT रूम तो अपनी बुक, क्योंकि शेड्यूल सब स्कूल पहले चले गए हुए ने, ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁక్స్ ਨੋਟਬੁక్స్ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰਖਵਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ. ਓਕੇ, ਸੋ ਨਾਓ open up your notebook and फटाफट write the answers. So we'll check whether your answers are correct or not. So I'll read the whole thing and then what you'll do, you'll fill in the blanks. Okay, so let me read. After a long time, the boy was now an
After a long time, the boy was now an, I lost my text, wait, yes. After a long time, the boy was now an old man came back. I am sorry, boy, I have nothing to give you. I am sorry, boy, I have nothing to give you, said the tree. I wish I could give you something. I am just an old stump. I wish I could give you something. I am just an old stump. I don't need anything now. I just want a quiet place to sit and rest. I don't need anything now. I just want a quiet place to sit and rest. I am very tired, said the boy. Well, an old stump is good for sitting and resting. So, well, an old stump is good for sitting and resting. Come, boy, sit down and rest. Come, boy, sit down and rest. The boy sat on the stump to rest, and the tree was very happy. The boy sat down on the stump to rest, and the tree was very happy. So, now I have dictated you the whole paragraph with the answers along with it. But answers are not shown here. I have spoken the answers in the paragraph itself. Now, how well you understood me? How well you heard me? How good did you catch my pronunciation of the word? And how well did you fit in? Now we'll check. Now I'll read the whole paragraph again with the blanks, and let's check your blanks are correct or not. Okay, so this is your self-checking. If you have wrongly interpreted it, then you put a cross. If your answer is correct, then put a small tick so that you can check yourself कि थानू अच्छी तरह क्यों नहीं सुनिया, कि थोड़ी प्रैक्टिस किथे घट हुई. Okay? Okay. After a long time, the boy, who was now an old man, came back again. I wish I could give you something. I am just an old stump. I don't need anything now. I just want a quiet place to sit and rest. I am very tired, said the boy. Well, an old stump is good for sitting and resting. Come, boy, sit down and rest. The boy sat on the stump to rest, and the tree was very happy. So, did you notice how many mistakes you've made? I would suggest all teachers, especially of smaller classes like 6th and 7th, do as many exercises of speak and write, because a lot of improvement is seen when you start doing dictations in the class. Because once they'll do the mistake again, they'll repeat the same mistake, third time they'll automatically improve it on their own. Automatically वो mistake खुद ठीक कर लेंगे, because अगर वो 2 बार does this spelling गलत लिखेंगे, तुसी 2 बार ठीक करोगे, the third time they'll tend to write it correctly themselves. So this is speak and write. This is a very interesting activity, and from class 1 we've been doing it. It's just that in primary schools we do it in words, and when we start growing up, we go to bigger classes, then we start doing it sentence wise and then paragraph wise. And now you're grown up kids, you should go into paragraphs more. Okay. Chalo. One exercise we did is mind mapping. Second exercise we did is speak and write. And third exercise, conversation or dialogue writing. गल्लां बातां, जो कि क्लास तुसी अथा पंडार च कर दियो, गल्लां बातां, conversation. What is conversation?
A dialogue is basically a verbal conversation between two or more people. The dialogue is an everyday social activity. When people meet, they often exchange greetings, interact about their whereabouts, professions, hobbies and other daily routine. Dialogues are often the spoken language segment and follow all the rules of the spoken language. चलो ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। बट अगर प्रॉपर कन्वर्सेशन, इफेक्टिव कन्वर्सेशन, एक एग्जैक्ट ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, डीकोडिंग एनकोडिंग ऑफ मैसेज जिहड़ी है ताही हुंदी है अगर आमो सामने गलबात होवे। सो अ डायलॉग इज बेसिकली अ वर्बल कन्वर्सेशन। गल्लां बातां दे दौरान जो मैसेज दा आदान प्रदान हुंदा, दैट इज कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। कन्वर्सेशन कैन बी बिटवीन टू पीपल और मोर। हुण जिवें कन्वर्सेशन नीचे जिवें दिखाया होया कि दो जणियां च हो रही है, तीन च भी गल्लां बातां हुंदियां ने। इन अ ग्रुप वी, लाइक योर टीचर, शी does her conversation with you. There might be 40 students in the class, but the teacher is conversing with you. The dialogue is an everyday social activity. Now, the lines which we speak during that conversation, that's a dialogue, okay, between two people. The dialogue is an everyday social activity. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। When people meet, they often exchange greetings. ਜਦ ਦੋ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? This is greetings. Then interact about their whereabouts. ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ? Where were you yesterday? ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। I had gone to ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। Professions, ਹੈ ਨਾ? ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, what is your mother doing? She is a teacher. This is the talking about profession. Hobbies. ਤੂੰ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? What does you do in your spare time? I listen to music. ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। And other daily routines. ਤੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ? What do you do in the free time, when you free in the evening after your school work is done? Then I go out and play. So this is what all is going on. The dialogues which are being spoken out, they help in creating a healthy conversation. What I am doing with you, you know, this is like conversation between you and me. So what I am speaking right now is my dialogue. Okay. Dialogues are often the spoken language segment जो बोलिया जा रहा है, and follow all the rules of the spoken language. और जो बोलन च जरूरी गल्लां ने जिन्हां दा ध्यान रखना चाहिदा, तो डायलॉग च उन्हां गल्लां दा ध्यान रखिया जांदा। Okay. So this is an example of dialogue writing. This is a dialogue, this is a conversation between a doctor and a patient. Doctor दे अपने dialogues ने, patient दे अपने dialogues ने। तो डायलॉग्स इकट्ठे होके एक कन्वर्सेशन बन गई, एक गलबात बन गई, ठीक है? सो डॉक्टर इज सेइंग, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? क्वेश्चन मार्क, बिकॉज दैट्स अ क्वेश्चन। द पेशेंट सेज, अ बिट बेटर, थोड़ा बहुत ठीक। डॉक्टर, दैट्स गुड टू हियर। आर यू स्टिल फीलिंग नॉजियस? कि तेरा हले भी दिल कच्चा कच्चा हो रहा है? पेशेंट, नो, आई हैवंट फेल्ट सिक टू माई स्टमक सिंस यू स्विच्ड माई मेडिकेशन। मेरा तो पेट उदन दा बिल्कुल ठीक है जिदन दी तुसी मेरी दवाई बदली है। तो ये डायलॉग्स दा इकट्ठा होके की बन गया? एक कन्वर्सेशन। ओके, लेट्स लर्न सम रूल्स व्हिच मस्ट बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग अ डायलॉग कन्वर्सेशन। कुछ रूल्स होंदे आ डायलॉग राइटिंग दे भी। व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ कन्वर्सेशन, देयर आर सर्टेन रूल्स व्हिच यू नीड टू कीप इन माइंड. So let's go through them. Yes. Use dialog tags. Now what are dialog tags? A dialog tag is the part of a sentence that indicates who is speaking. Common example of dialog tags include he said, she replied, I asked, they yelled. ताकि थोनों आइडिया मिल जाए कि डायलॉग है किस बारे, बोल कौन रहे हैं. Use dialog tags to differentiate who is speaking at different points in the dialogue. While you don't need to use a dialog tag,
each time a new person speaks, it is helpful to include them whenever there is a change of tone or a break in an established pattern. Example, do you have any special skills? Question mark, inverted commas close, the interviewer John asked. Okay, do you have any special skills? The interviewer John asked. ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ कि do you have any special skills कौन किनू पूछ रहा है, तो बाद question tag सानू दसदा है dialog tag ते the interviewer John सी interviewer जो interview ले रहा सी उन्हें पूछा की पूछा do you have any special skills, तो सानू हुन पता लग गया कि question दा dialog tag की है। जिवें आपां आम तौर ते कहने आ मैनू मैम ने कहा कि की तू काम कर लिया, हुन जे मैं कहा की तू काम कर लिया थोनू की पता बेटा कि क्वेश्चन किनू पूछया, थोनू किने पूछया सी, तुसी तीसरे बंदे नू कह रहे हो। सो यू नीड टू इंडिकेट विद द हेल्प ऑफ अ डायलॉग टैग। Use a variety of dialog tags. So there's a huge variety of dialog tags which you can use. When using dialog tags, try to use a variety of different tags instead of only using the same tag repeatedly. Use numerous tags to provide more context to the scene. There are many dialog tags you can use, such as he exclaimed, I asked, she stated, she wondered, he screamed, they whispered. सारे डिफरेंट ने ना, तो आगे डायलॉग थोड़ा माइंड पहले ही बन जाऊगा कि किस टोन च पढ़ना है, किस टोन समझना है। जिवें ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेमेशन, विस्मिक चिन्ह कदों हुंदा जद कोई साय हुंदी है, सैड टोन, एक्साइटेड, ओह सॉरी आई गॉट लेट, ओ माय गॉड। देन आई आस्क्ड, मैं उन्हें पूछा, दैट मीन्स क्वेश्चन पुट होगा। She stated, that means एक declarative sentence, एक positive declarative sentence होगा। She wondered, हैरानजनक। He screamed, गुस्से च। They whispered. So you can understand the tone. Tone की हुंदी है, जिवें आपां कहंदे ने इस चीज़ दी तसीर गर्म है, इस चीज़ दी तसीर ठंडी है, तो सानू पता लग जाऊगा साडे conversation दा टेम्पर की है। इज इट अ हॉट कन्वर्सेशन और इट्स अ कोल्ड कन्वर्सेशन, कि एक गुस्से भरी कन्वर्सेशन है या है प्यार भरी कन्वर्सेशन है। सो कीप यूजिंग अ वैरायटी ऑफ डायलॉग टैग्स, इट मेक्स द कन्वर्सेशन मोर क्लियर टू यू। सेपरेट न्यू स्पीकर्स, ईच टाइम यू इंट्रोड्यूस अ न्यू स्पीकर इनटू डायलॉग, प्लेस देयर कोट ऑन अ सेपरेट लाइन। ईच टाइम यू इंट्रोड्यूस अ न्यू स्पीकर, अगर साडी कन्वर्सेशन च दो तो वध स्पीकर्स ने, असी एक नवे स्पीकर दा डायलॉग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, देयर कोट ऑन अ सेपरेट लाइन। दिस रूल अप्लाइज टू एनी सिचुएशन वेयर अ डिफरेंट पर्सन स्पीक्स, नॉट जस्ट व्हेन अ न्यू पर्सन एंटर्स अ कन्वर्सेशन। Separating each speaker onto a new line makes the written dialogue easier to read and follow. हुन एग्जाम्पल पढ़ के देखो, थोनू खुद ब खुद समझ आ जाऊगा ना। इनकरेक्ट यूसेज, कित्थे गलती होंदी है। हाउ आर यू जॉन आस्क्ड, आई एम फाइन। हाउ आर यू, मेरी रिप्लाइड, आई एम डूइंग वेल, थैंक यू फॉर आस्किंग, जॉन सेड। हुन किते ना किते गड़बड़ हो रही है साडे दिमाग नू समझण च, दैट हु इज आस्किंग, हु इज सेइंग, हु इज आस्किंग whom, हु इज रिप्लाइंग व्हाट। सो करेक्ट यूसेजेस, असी सही तरीके नाल डायलॉग टैग्स किवें यूज करने ने ते सेपरेट न्यू स्पीकर्स किवें करने ने। करेक्ट यूसेज सेज, हाउ आर यू, जॉन आस्क्ड। एक लाइन सानू पता है जॉन ने पूछा हाउ आर यू। आई एम फाइन, हाउ आर यू, मेरी रिप्लाइड। हुन मेरी कहंदी मैं ठीक हाँ, तुसी सुनाओ। आई एम डूइंग वेल, थैंक यू फॉर आस्किंग, जॉन सेड। नाउ जॉन ने पहला पूछा सी, हुन जॉन मेरी दे क्वेश्चन दा आंसर दे रहा कि मैं बिल्कुल ठीक हाँ, थैंक यू फॉर आस्किंग, शुक्रिया पुछन ले। ठीक है ना। सो डिफरेंट लाइन्स ना जब असी डायलॉग सेपरेट कर दिया, इट बिकम्स मोर ईजी फॉर अस टू नो which speaker is speaking what. Then punctuate
inside quotation marks. In most situations, any punctuation goes inside the closing quotation marks rather than after them. This includes punctuation such as question marks, exclamation points or commas. के मतलब जेडे punctuation वाले marks ने वो inverted commas दे अंदर होंदे ने ना कि बाहर. Incorrect usage देखो, Mary replied, comma, inverted commas open, thank you for coming, full stop, inverted commas close. Now correct usage is Mary asked, comma, inverted commas open, how can I help you today? Question mark, inverted commas close. There are, however, exceptions to this rule. Exceptions largely depend on how you are using quotation marks within the sentence. For example, if you are asking, agar तुसे question पूछ रहे हो, a question mark about a quote, the question mark goes at the end of the sentence rather than with the words in the quotation. For example, which Shakespeare play contains the words, comma, inverted commas, now is the winter of our discontent, inverted single inverted comma close and question mark is outside, because here the question is asked in a different way. Which Shakespeare play? हुन असी Shakespeare दे play दे बारे पूछ रहे हैं question mark, तो question mark भी नीचे ओदी headline तो बाद आऊगा, ते पर की होगा ਉਹਦੇ ਸਿੰਗਲ ਇਨਵਰਟਡ ਕਾਮਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਦੋ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ. ਓਕੇ, then capitalize only at the start of sentences. This you all know, this is a very common error and very common punctuation skill. Even if your dialogue ends with punctuation, only capitalize the next word if you are starting a new sentence. Consider the dialogue as its own sentence when determining where you should capitalize a word. For instance, if you were to remove the dialogue, you may ask yourself if it would make sense to capitalize the following word normally. Incorrect usage, galti kithe hundi hai? Inverted commas open, I can't wait to see you, exclamation, inverted commas close, he yelled. Correct usage, sahi किवें लिखना है? Inverted commas open, I can't wait to see you, exclamation mark, inverted commas close, he small रहेगा H, yelled, full stop. Okay, because it is at the end. In the beginning, if it would have been he, then H would have been capital. Then break up long monologues. Okay, break up long monologues. It's rare that someone speaks for a long time without interruption. If you are writing a long piece of dialogue, it's often helpful to find ways to break it up. Simple methods of doing this include having another character, ask a question or taking a brief moment to describe the scene. Exceptions to this rule may include a character giving a speech or making a presentation. A monologue is a speech given by a single character. Dialogue, दो जनियां दे विचकार. Monologue, जो एक single person, जिवें हुण for me itself, mine is a monologue. But if I consider you as sitting right in front of me and the conversation is going on, then we are sharing a dialogue. अगर मैं इकल्ली अपने आप नाल गल कर रही हां तां monologue, ते अगर मैं तुहाडे नाल गलबात कर रही हां तां dialogue. तां हुण तुसीं बेटा सारा कुछ ध्यान च रखना है. And then I have prepared some homework for you. Make a mind map that describes your school, which is very easy. You have so many things in the school. Write a dialogue conversation between you and your teacher requesting him or her to take your retest. So we come to the end of the session. I know this session was a little long, but I could not skip anything. Everything is helpful for you. It improves your reading, writing, listening skills. So please keep in mind whatever has been taught to you. And teachers, please make note that whatever homework is given in the end, the children make it a point that they do and you check it tomorrow. See you soon. Thank you so much.